Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So today is our last class. आपने कोई previous classes में से कोई question करना है, कोई जो है आपको query है, you can always ask. You can PM me always, and you can ask in class. So I have prepared a quiz for you people today, and it is 40 MCQs are there, and you have to answer them correctly in order to be successfully, or not all of that, at least 50%, you know, the passing marks and the passing points according to Google ratio. So I guess we will take the quiz at the end of the class, or if you are willing to take it in the beginning. Scratch file का problem आ रहा है, तो you can uninstall it and then reinstall the product. It will help you. मेरे पास भी आया था जब when I installed it first, तो आप इसे uninstall कर दे कंप्यूटर से and then try to reinstall after a day. तो थोड़ा सा गैप आ जाता है, वरना uninstall के साथ आप फौरन इंस्टॉल करते हैं तो it will ask you advanced ना, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर. Okay. So without any further delay, shall we begin? And it is a 40-minute quiz. If let me know if you want me to take at the beginning of the class or at the end of the class. Take it at the end. Sure. Okay. So let's go. Today we are going to see, हमने letter head देख लिया था, हमने calendar देख लिया था. अब हम देखेंगे कि how to put those logos on, you know, cups and 3D objects. Okay, so let's open a cup. I've downloaded it before the class. Here we are, and it is a little bright cup. बहुत irritate करता है. Let's okay. Anyways, फिर भी हम इस कप पे अपना जो है पैटर्न हमें रखना है, हमें लोगो रखना है. We can always, सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं. पैटर्न क्योंकि मेरे पास ओपन है, you can select it manually by selecting it all. ये लाइन आपके पास शो हो जाएगी, and you can then select it from here, copy it, here, copy, and then you can paste it here, paste. मैंने शॉर्टकट कीज से नहीं किया, बाकी इसकी शॉर्टकट कीज हैं. सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, कॉपी के लिए कंट्रोल C, एंड देन कंट्रोल V. अच्छा, ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ से मैनुअली करती रही हूँ. मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज करके दिखा देती हूँ. दैट इज कंट्रोल T, और मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कप. This is too bright to deal with. Okay, let's take another cup. This one is too bright. Here we have this one.
थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा हमारे पास। Sure, that's great. Let me save this and I'm opening it. Take many files like to you. Let me came out of this. Okay, now. Okay. Here we have a mug. And you, if you want to select it in the background, you all know how to change it. I'm just going to show you how to put a pattern on anything. Control C and here we are Control V. इसको हम Control T कर लेंगे to transform it according to cup size. Okay. This looks okay, a little bigger, I guess. Okay. This looks good to me now. What you have to do, go into transform and choose warp. ये जब आप warp choose करोगे तो you can drag it to the corners properly. You can use these handles to move it a little forward and backward, and the dots to adjust it, and handles to move it forward and backward. Okay. A little handle downward. First of all, we have to pick the corner and then the handle. Okay. So drag it until you are satisfied with your corners, products, etc. So I hope now it's an easy thing for you people after learning so much about Photoshop. मैम 3D मॉकअप कैसे बनाएंगे? Okay, we have many options for 3D mockup. This is it out. यहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हो रहा है. 3D मॉकअप यहाँ से आप मॉकअप देखें. मॉकअप की टेम्पलेट ले लेते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पे मोबाइल में भी अपना लोगो, कंप्यूटर में भी इस तरह पेस्ट कर सकते हैं, बट आई एम लुकिंग फॉर लोगो मॉकअप, save image, and then you have to have a logo for this. I have just opened Adobe stock photos today. Let me search something from here. Viewers, login or create an account. I've never been to here. Let's download it from here. I'm saving it and let's open it in our Photoshop. ये मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, खराब हुआ है. And let's open the file of logo mockup.
यहाँ पे फाइल मूव करिए आपकी। So I'm selecting the mockup over here, and I don't know why am I selecting, because I've never tried this 3D logo mockup thing. I hope it works like what I'm thinking about it. और हमने एक फाइल डाउनलोड की थी। ओके, यहाँ से आप ओके, let me control Z। चलिए पहले टेक्स्ट को कर लेते हैं। Here we have this logo mockup. What we can do is nothing is happening over here. Okay, wait. We want this background only, but not the product. Okay, let's take another one. This here you can open it, select and mask। आपके पास ये आपकी लेयर आ गई। अब हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए, इसका ये लोगो मॉकअप थिंग हम हटा देंगे। So control Z। For a while इसकी हमारे पास जो ट्रांसपेरेंसी है, it is moving something like this. And let's bring this thing by converting it into a smart object. अभी आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपने जो कन्वर्ट करना है, इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ये ना, यहाँ पे ये चीज शो हो रही है, ये हम मास्क करें तो इट गोज ऑल इन वेन। मैं बस मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। एंड इस पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ है। लेट्स ओपन इट हियर, और हम यहाँ पे इसको बेवल एंड ये हमें साइज कितना चाहिए, सॉफ्टन कितना करना है, इफ यू वांट द स्ट्रोक और नॉट, स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट इट अ लिटिल ग्रेइश, लाइटर ग्रे थिंग, और अ लिटिल डार्कर, इनर ग्लो दे देते हैं हम इसमें ड्रॉप। अब
never done it before, but you asked and I tried. यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ. We should apply more effects to that. Okay. I'm increasing the depth. If you want a chisel hard, emboss more. Let's see now how does it look. इतना ज़्यादा इस पे इफेक्ट नहीं आ रहे हैं. But again, it's different from the previous one. Let's try something else. Stroke को देख लेते हैं. Stroke को हम opacity outside है, stroke का size थोड़ा और बढ़ा देते हैं. Let's say to this much. इसकी कोई mockup file होती है. Let me search the article. ओके, यहाँ पे ये कुछ हमें दी हुई है. इसके लिए इलस्ट्रेटर से हमें फाइल कोई वो करनी पड़ेगी. Let us see, load a document, create a smart object, create the shrinking action, create the 3D effect, add layer styles. Layer styles add only, but after creating the 3D effect. Okay, so let's come onto a different background. मैं ये सब off कर रही हूँ. Here we are. और यहाँ पे हम कोई भी ग्लास बैकग्राउंड डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं. या मॉकअप बैकग्राउंड कह लेते हैं. Okay, so let's see कि कौन सा अच्छा लगेगा. Sorry, it's taking too much time because I am learning with you people, and not bad to admit that, I guess. कि जो मुझे खुद नहीं आता, so I have to admit. And learning is the key. I don't know. ये wall पे देख लेते हैं some designs here. ये I hope that I don't save. So open in Photoshop. Let me drag and drop. मैंने अपनी current file कोई, but it's too short for this. Let me open it. Again, why is it too short? Okay, let's transform this into a bigger picture. I hope it doesn't pixelate that much. Okay, avoid the white background. The picture is too small. The next step to create a smart object. हमें एक smart object चाहिए, and that is here we have. Okay, I am transporting it here. ये बड़ा है, background छोटा. Again, background size में problem.
background. ओके सो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, तो लेट्स गो फॉर अनदर बैकग्राउंड दैट इज लिटिल बिग. So let's. I need the big one. I hope yes, 3000 by 2000 is good. Saving down the image. File open. इसको न्यू में ओपन करेंगे. Yes, this file is good. यहाँ से ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे ले जाएंगे, बट इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम है, and that is this white color in between the dot, but we will work with that. Okay, the next thing is create the shrinking action. Okay, where is that shrinking action? Mask, liquify, neutral filter, and it have to be like, you have to search how to create shrinking effect. Photoshop. We don't have anything. Shrinking basically कि वो आपकी image का size जो है वो reduce करना है. This is we have wooden floor, free transform, flip horizontal, polygon lasso tool, and magic wand tool, filter blur, Gaussian blur, clip and mask. Okay, they are making it just complex. Keep it to normal. 3D options are still close. I don't know why. According to this, we have to create a shrinking action than the 3D effect. So for that, अगर हमारा जो ये background है, we open this and if we convert it into a smart object as well, then do we have 3D options? Other pixelate, stylize, other. Okay, now these are the filter options.
क्रिएट क्लिप एंड मास्क हो गया, लेयर मास्क भी कर दिया, वेक्टर मास्क नहीं, rasterize smart object, तो it already is. It needs some really serious file. Add layer styles and create shadows. Well, I will look up and I'll tell you shortly after the quiz in 5 to 10 minutes because it's taking a little bit time to capture this. For now, let's see how to use Puppet Warp tool. Puppet Warp tool is basically okay. A boy looking so we have so many men, women. I need a bigger picture. I'm saving this image and I'm opening this. Okay, let's see. So he's a boy and he is looking downwards. अब puppet walk में हमने क्या करना होता है कि हम move कर सकते हैं चीजों का little twist, upward, downward, backward, a little, not more than that. अच्छा, अब यहाँ पे he is a guy, यहाँ पे मैं इस layer को unlock कर रही हूँ. Going to another layer, हमारे पास already जो है वाइट बैकग्राउंड पर है, हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो ऑलवेज वी कैन डू क्विक सिलेक्शन. So for the quick selection we can here and here, a little bit here. I'm selecting and masking it. Before let me control that. Before that, I just want it a duplicate layer in case if something happens to the layer. So let's select and mask, and I'm creating the smart object of it. After creating the smart object, you can see we can move a guy, but we don't want to move. अब हमने इस layer पे select किया है, and the next thing we will do is going to image and there is a modification, modify and expand वाला option कहाँ गया हमारे पास? The modify and expand one option is off. Again, there are so many options that are off in my version of Photoshop. It should have to be open now. Here we are modify and I don't know why it is off. Because it usually works simply, really simply. I guess I'm using a modded version, that's why it is happening. एक्सपेंड करने से ये कि हमारा फायदा हो जाता है, बट लेट्स सी कि अब हम इस पे पपेट वॉक कैसे यूज कर सकते हैं. So it should be giving us some pinpoints.
No, because it's too close to an existing pen. And here we are. So by clicking onto this, and you can, एक यहाँ पे ऑप्शन आता है रोटेशन का, आप ऑल्ट क्लिक करते हो तो आता है, ये देखो, you can see. So you can move the guy. मैंने और पिन शायद मुझे ऐड करना चाहिए. And let's try this over here. और ज़्यादा डाउन हो गया ये. Can you control that? Okay, तो इससे क्या होता है, you can always move it a little bit. So let's just use this pin to carry it backward. जो हमने पॉइंट्स लगाए हुए थे, वो ज़्यादा पॉइंट्स लगाने का ये मतलब होता है कि आपने इन पार्ट्स को आइसोलेट कर दिया कि लाइक दे वोंट मूव. लेट्स क्लोज द आई ऑफ अ लेयर और देखते हैं कि इसमें गाने में क्या चेंजिंग आई है. लेयर इज, एक मिनट, कैंसिल अप्लाई करना पड़ेगा. इसका जो है हेड खराब हो गया है. Let me see if now the 3D file. Face swap. Face swap here is kind of not a good thing. So I'll not teach you how to do that. But face swap is possible. लेकिन उसमें हमारे पास, आपके पास कटिंग होती है बेसिकली. आप पिक्चर कटिंग यूज करके एंड देन द फेस यू वांट टू ऐड, और फिर उसको आप पर्सपेक्टिव में एडिट करते हो तो इट विल लुक गुड. आई एम जस्ट वर्किंग ऑन अ सिंपल लेयर एंड गोइंग टू पपेट वॉक. अब ये देखिए पूरा इसने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया. ठीक है, अल्टर एंड ये बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है. जब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम किया था तो हमारे पास जो था मैन था वो रोटेट हो रहा था, और अब जो है हमारे पास पूरा वो रोटेट हो रहा है. तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे. एंड फॉर दी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें दोबारा पपेट वॉक पे आना पड़ेगा. Here we have in the added in puppet pop. अब देखें हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे इसने selected selection दिया. Now you can this lab, this point, this point. If I want to move this a little forward, like it has been moved, this point, wait a minute, मैंने यहाँ 2 पॉइंट लगा दिए. मैं पॉइंट्स को डिलीट कर रही हूँ. and let's move the guy a little upward. पॉइंट मैं यहाँ दे रही हूँ, रोटेट नहीं कर रही, मैं जस्ट सिंपली मूव कर रही हूँ. you can see. Okay, now I am applying it. So you can see the difference in before and after guy. I'm turning this off. Before he looked like this, and afterward he looks like this. थोड़ा सा हमने इसका पैर रोटेट किया है, हाथ आई डोंट नो कहाँ गायब हो गया. अच्छा, इस पिक्चर में कट ही नहीं हुआ था हाथ से. And a little shift in the posture. तो puppet walk हम इस तरीके से वर्कआउट करते हैं. इसको हमारे सर ने जो हमें समझाया था, he teach us on
एलिफेंट, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड पे एलिफेंट है एंड ही लिटरली मूव द एलिफेंट एंड इट लुक्स लिटिल फनी, है मजे का था। मेरा मॉडिफाई का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, बट मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ी सी सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाती है। सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाती है तो इट विल बी इजियर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको बैकग्राउंड चेंज करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले रही हूँ मैं, ताकि मैं शो करवा सकूँ कि हाउ द चेंजेस हैव बीन डन इन इट। अच्छा, सबसे पहले मैं एक लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पपेट वॉक पे काम करता है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको पहले सिलेक्शन देनी होगी एंड हियर वी आर। Okay, any part that is left or undone. Okay, I guess this looks good. Now I'm masking this and converting it to a smart object. Okay, now this is our smart object. Going to the added option again, and here we have puppet wall. अब यहाँ पे अब आप देखिए, एक यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगी, इसको मूव करूंगी तो ये पूरा एलिफेंट मूव करेगा। तो आपको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब ये आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये दोनों पार्ट्स मूव नहीं होंगे, ये पार्ट मूव होगा। लेकिन अब आपने यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है सो दैट यू नो कि ये वाला पार्ट मूव ना हो और ये वाला पार्ट मूव हो। चलिए इसकी जैसे अटैच है साथ, तो थोड़ा सा मसला करेगी। लेट मी टेक अनदर पिक्चर जिसमें बिल्कुल अलग हो। Let's and if you want कि आपको कटिंग नहीं करनी तो you can always open it as an smart object। तो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ओपन हुआ है। लेट्स डायरेक्टली अप्लाई पुपेट वॉक। तो ये पूरा आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, उस वजह से पूरे पे अप्लाई करें। ठीक है, let me change the option and I'm releasing. Okay, here we are। ये मेरे पास सिंपल बैकग्राउंड है। लेट्स ओपन इट and duplicate the layer। Control J से duplicate हो जाती है and I'm just forgetting that because there is so much noise in the background। Well, क्विक सिलेक्शन टूल इस वजह से अच्छा लगता है कि क्विक काम कर देता है। And by pressing Alt, I'm realigning the selection and we are good to go। Select and mask, convert to smart object। Now we can apply puppet wall। We have this point, we have this point, and we have this point। देखिए अब पीछे से पूरा एलिफेंट मूव कर रहा है क्योंकि हमने पीछे से पॉइंट्स नहीं दिए। तो वी हैव टू गिव द पॉइंट्स ताकि ये पॉइंट्स मूव ना करें। अब देखिए अब एलिफेंट नहीं, सिर्फ
ये जो नोज है ये मूव कर रही है, ठीक है। नाउ यू कैन सी पूरा एलिफेंट नहीं है, जो हमने इसकी नोज थी, वी मूव दिस फॉरवर्ड. Let's move it to another bit by duplicating the layer. ठीक है, and applying puppet warp. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हम इसी पॉइंट को और आगे मूव करेंगे, ठीक है। बट दिस वुडंट लुक, इतना ज़्यादा चेंज नहीं अच्छा लगता है, अ लिटिल बिट अच्छा लगता है कि पिक्चर की ओरिजिनलिटी बाकी रहे, ठीक है। If you want to move the airs, you can move them as well. लेकिन अगेन जो मेजर इसमें शिफ्टिंग आती है, जैसे पोस्चर चेंज कर सकते हैं आप, जो हेड थोड़ा सा टिल्ट है उसको थोड़ा सा आप सेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं. लेट्स अप्लाई दिस एंड यू कैन सी कि हमने यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं. आई एम टर्निंग द चेंजेस ऑफ. पीछे हमारे लेग्स नहीं हिले बिल्कुल भी, पीछे वो ऐसे ही थे जैसे पिक्चर में है. ये हमारे पास ये चेंजेस है, लेकिन बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि बाद में ये चेंज किया गया है, ठीक है. तो इट इज गिविंग यू अ नेचुरल मूवमेंट. और आप इसके पैर को भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं इफ यू वांट. आई एम अगेन टेकिंग अ डुप्लीकेट लेयर. जब भी आप डुप्लीकेट लेयर लोगे तो प्रीवियस वाले फिल्टर्स आपके पास हमेशा मौजूद होंगे, और जैसे पपेट वॉक पे आओगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स लगे हुए थे. इफ यू वांट टू मूव अ लेग, तो आपको उसका भी एक पॉइंट देना पड़ेगा कि इतना आपने मूव करना है. ये मैंने ऊपर इनके पिन पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि जो है कि ऊपर से मूव ना हो. अगर मैं ऊपर नहीं दूंगी तो फिर ये ऊपर से मूव होंगे. अभी देखें ऊपर वहां से ये पिवट पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, उससे आगे हम लोग मूव कर सकते हैं. एंड लिटिल बिट, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं क्रिएट करवानी. एंड एंटर इट. लेकिन बहुत स्लाइट मूवमेंट हुई है, बहुत स्लाइट. मैम तो पपेट टूल्स से हम फेस फीचर में चेंजिंग कर सकते हैं ना? नहीं, पपेट से नहीं, आप वॉक टूल से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पपेट से नहीं. पपेट वॉक तो मूविंग के लिए है, आपको थोड़ा सा आपने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसकी डिग्रीज चेंज करनी है, तो इसलिए होता है. ओके, जैसे सिलेक्टिव पार्ट को स्मार्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे. मैम फेस स्वैप कैसे करते हैं? फेस स्वैप इससे नहीं होगा. फेस स्वैप यू कैन ऑलवेज डू फ्रॉम ट्रांसफॉर्म एंड हियर इज वॉक. इस वॉक से हो जाएगा. कैन ये मैं आपको क्लास के थोड़ा सा एंड में, मैं 10 मिनट्स दूंगी, मैं 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दूंगी लाइक एट 9 PM. तो फिर क्या कहते हैं एंड के 10 मिनट्स हम आपके उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, जो आपका लाइक ऑनलाइन पोर्टफोलियो है. And then I'll teach you this as well, how to make a 3D logo markup. अदरवाइज इसको खुद प्रैक्टिस कर लूँ, बिकॉज क्लास में टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं. तो यहाँ पे हमने पोस्टर चेंज किया. इसमें पपेट वॉर्प में मूवमेंट होती है. पपेट मतलब कि आप उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हो उसके वॉर्प से, और पपेट्स उन्हीं को कहते हैं जो कठपुतलियाँ होती हैं इस तरीके से. तो ये आपके लिए कठपुतली हो गई है. You can always move the teeth and you can make the eyes wide open. लेकिन फेस स्वैप जो होगा, जैसे हमने कप किया था, हाँ वो कप अच्छा नहीं हुआ था, उससे होगा. इसकी एजेस राउंड नहीं है, स्ट्रेट है, इस वजह से ये जो है रियल नहीं लग रहा था.
Let's go for another mug very quickly. थोड़ा सा राउंड इफेक्ट होता है ना, will look good. वाइट तो मैंने लेना नहीं है, it is too bright. कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा. I'm just opening the file. Download. मैं इस पर थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, पिक्सेल्स थोड़े बहुत हैं लेकिन अच्छा, we don't want this for now. At least we don't want this as well. Untitled, no. Okay, just I mistakenly select the wrong option. Okay. We want to place this file, Control A. Let's see. Control A, Control C and Control V. अब इस पे Control T कर लेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया थोड़ा सा. ओके, इस पे हम वॉप लगा देंगे. यहाँ से यू कैन यूज द वॉप. और अगर किसी को याद हो तो what did we do for removing black color from the image? तो यहाँ से it has been removed. आपके पास सिंपल आपका लोगो आ गया. And if you don't want to remove this, you can multiply it. लेकिन ब्लैक कलर है और अगर बैकग्राउंड में ब्लैक होता था then it would look great. तो मैं ब्लैक कलर रिमूव करना चाह रही हूँ. Just I want this. And you can add your logo like here. If it is in JPEG, तो JPEG में अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो भी आप उसे इस तरह रिमूव कर सकते हो. अगर वाइट है तो वाइट का भी मैंने रिमूव करना बताया था कि किस तरह करते हैं. And then चलें, let's add quickly a quote over here. And the black background would look great. I feel like I'm losing myself. Just because the background, I chose this picture. And let's come back. And I'm turning this layer off, opening the new picture. And it is CDRD. It is not downloaded. I'm choosing another picture. I don't know, this picture is quite blurred. But anyways, let's begin. Okay. Control A, Control C, and go back to the previous picture. Control V. पूरे पे आ गई है ये. Control T. Let's transform this. And
This picture is so blurry. I don't think I have a good day today. Every picture that I found is like, I don't want to save the link. I want to save image. Jitna I want to go quick, utna hi it is taking time. Okay. Cancel. Removing or deleting this layer. File, open. 300. I don't know why I'm finding these depression codes. Control A, Control C, and Control C. Where is the code? Where? Transforming it by pressing Control T. The shortcut keys आपका काम आसान कर देती हैं. If you remember that, it will help you. Okay, so here we are. I don't want this picture like that. Okay, this is just not my good day. You can गुजारा कर लें इसके साथ बराए मेहरबानी बिकॉज मुझे अच्छी पिक्चर्स आज नहीं मिल रही हैं. So a little shift in perspective, sorry, in warp. नीचे से भी हम लेंगे इसे points. Okay, we want it to this point and then we have handles. It won't matter क्योंकि हम black color जो है remove कर देंगे. We just want it to look like it has been pasted over here. So the thing is here and apply effect of ज़्यादा ही लाइट हो गया. Screen lighter color, linear dodge, text बहुत इसमें आ रहा है तो that screen is enough. I don't know, the picture quality is showing good over here, but over there it is just like it is something that is not good. Yeah, the words are too small. हमें थोड़े और capital लेने चाहिए थे. Just like this, stars can't shine without darkness. Okay, so we have 40 minutes for our quiz. Quiz के दौरान I'll stop recording of the class. So be prepared about that. If you want to ask something like about the quiz, ये नहीं कि question बता देना. It's something related to tools, जिस तरह के एक आपने दिया है quiz, you know. So if you wanna ask something regarding that, you can ask. Control A, Control C, and okay, here I just remove the photo. Okay. Fine. Okay, मुझे लिंक भी आपका देखना पड़ेगा. But I'll see. I am quiz next week.
बेटा आपकी आज लास्ट क्लास है तो हाउ कैन इट बी गॉन फॉर नेक्स्ट वीक? So I'm not unlocking the background, I'm just pasting it simply over here and applying warp. Because अगर मैं क्लास के बगैर क्विज लेती हूँ तो some people are busy कि कोई कब दे रहा होगा कोई कब दे रहा होगा. So in between the class there is time constraint as well. There is, you know, a surety, okay, like you have done in a specific time. So I'm adjusting it according to the warp. मेरा तैयारी अच्छे से हो जाएगी. इतना मुश्किल नहीं है, मैंने बनाया, easy है. If you have submitted all of your assignment, तो जाहिर सी बात है हमने वर्क किया होगा, काम किया होगा, तो कोई बहुत एडवांस नहीं है, मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस है, वही about RGB, CMYK, tools, options. बस कोई एक दो थोड़े से होंगे कंफ्यूजन, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है. And it's 25 MCQs are about Illustrator, 10 about Lightroom and 5 about InDesign. InDesign पे हमने इतना काम भी नहीं किया था and it is a bit tricky, तो इस वजह से भी मैंने InDesign को इतना कैप्चर नहीं किया. You can see, you can multiply, you can dark, you can lighten it. इसको नीचे से थोड़ा सा इसके edges को और होना था. वैसे usually what we do, we multiply it on the mark. If whatever we are pressing logo and okay, so here we are, we have 5 minutes. You can search. फिर मैंने भी गूगल पे सर्च करके बनाया, मैंने भी अपने दिमाग से नहीं बनाया. गूगल पे सर्च करके कोई एक आध आइडिया है तो मैंने फिर वो आइडिया लिखा है, बाकी सारे मैंने गूगल से ही बनाए हैं. अक्सर हमारे टीचर्स भी टेस्ट गूगल से ही बना रहे होते थे. एंड रिगार्डिंग दैट मैं नमाज पढ़ लूँगी क्योंकि यू हैव 40 मिनट्स, और मैं आपके लिए 3D लोगो मॉकअप देख लूँगी एंड देन आई विल टीच यू 3D लोगो मॉकअप, और उस टाइम मैं क्लास की फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगी क्योंकि 14 मिनट्स हम कुछ कर तो नहीं रहे होंगे, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम कि अगर कोई देखे तो उसको 40 मिनट्स ना मिले जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हो. So I am going to open my Google Forms. Okay. Here we are. You can see total of 50 points over here. It is because that MCQs 40 है. Again, if you have submitted your Illustrator and Photoshop assignments, then you get 10 marks for that. Okay. And then there is always section 2, and this is that. I hope. Let me select the link for you people. I'm copying it and I'm sharing it on WhatsApp shortly as well as in the Zoom room. मैम को मैम पोर्टफोलियो में टाइम, यस बिल्कुल पोर्टफोलियो में टाइम मिल जाएगा आप लोगों को क्योंकि आई नो उसकी वेटेज ज़्यादा है. लाइक आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर. Okay, you have portfolio online for 40%, so you can get a week for that. And if anyone has any genuine issue, then he can take more than, sorry, if there is no he class, he can take more than a week. So
it's up to you, but for the certificate you have to submit your portfolios and portfolios online. तो आप online portfolio जब अपना करेंगे तो you have to just share the link. शेयर करेंगे लिंक तो we everyone can see कि you have made this or that. या फिर अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो you can always do it in the Google Drive. अपनी एक फाइल बना लें, वहाँ पे आप अपनी सारी जिपैट्स ट्रांसफर कर दीजिएगा, गूगल ड्राइव का लिंक फिर शेयर कर दीजिएगा एंड देन वी कैन सी. एंड with respect to that we will sorry allot तो नहीं है गैस, हम फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे. फिर मसला आ गया था तो हाँ हाँ कोई बात नहीं. आप आपके पास पोर्टफोलियो के लिए एक्स्ट्रा अनदर वीक है. दिस इज जस्ट फॉर द क्विज, क्योंकि क्विज में थोड़ा सा इशू हो जाता है फॉर द फेयर थिंग एंड टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल द थिंग्स. तो इस वजह से आई एम जस्ट टेकिंग द क्विज इन द क्लास. बट पोर्टफोलियो के लिए यू विल हैव अनदर वीक. यू कैन सबमिट इट टू मी like by Sunday, and you have to share the link on the WhatsApp group. ठीक है, just remember that. I am sharing it 2 minutes before कि आपको लिंक अगर लोड होने में टाइम ले रहा है तो you can see. Okay, I'm pasting it over here. Okay, and I have shared the link here, and let me share it here as well. So yeah, I hope every one of you have the link now. I have to do this one thing.